सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। Hi everybody, this is Sanjay. Today we are going to study the second chapter from standard 10. Our second chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is written by himself. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. तो apartheid एक political system है जो separate करता है उनके रेस के हिसाब से, उनका जो कास्ट होता है कास्टिज्म, उसके हिसाब से वो political system को separate करता है. Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. ये दोनों कंट्री में ये political system है. Have you heard of Nelson Mandela and his African National Congress? आपने कभी सुने हैं नेशनल मंडेला के बारे में या मंडेला या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में? Spent a lifetime fighting against apartheid. तो अपनी लाइफ को पूरा फाइटिंग में लगा दिए, अपनी लाइफ को जो लाइफ टाइम है पूरा फाइटिंग में लगा दिए ये apartheid के खिलाफ. Mandela had spent 30 years in prison. तो वो 30 साल प्रिजन में बिताए. प्रिजन मतलब जेल में कैदी के हिसाब से. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. तो फाइनली क्या हुआ कि 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेटिक वे से. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. तो वो जो साउथ अफ्रीका पहला ब्लैक मैन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट ऑटोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन. तो उनका जो हिस्टोरिक ओकेजन था उसके बारे में बताए हैं यहाँ पे. द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10th May 1994. You can read it out. Okay, just I'm going to start from the text. 10th May, down bright and clear. तो 10th में क्या था? Bright and clear था. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो वो लोग सब आए थे to be surrounded closely by. तो बहुत उनको खुशी लगा कि बहुत सारे लोग dignitaries लोग आए थे उनके साथ और उनमें कुछ टाइम बिताए उनके साथ. World leaders were coming to pay their respect. उनके जो सम्मान में वो आए थे before the inauguration से पहले वो आए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. तो जो inauguration हुआ था वो largest gathering हुआ था जो international leaders आए थे जो कि American soil के ऊपर था, बहुत बड़ा था. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. Amphitheater means a building without a roof, जहाँ पे छत नहीं होता है. With many rows of seats rising steps. तो steps जैसा कि होता है, seats होता है बैठने के लिए, rows के हिसाब से होता है. तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में हुआ था. For decades, this had been the seat of white supremacy. तो ये decades मतलब हम 10 साल बोलते हैं. तो वो सालों साल होकर white supremacy रहते हैं, मतलब white man president हुआ करते थे, लेकिन इस साल एक black man president हो गया है. So that and now it was the site of a rainbow gathering of different colors. तो different colors बैठे थे, सबका कलर black था, कोई white था, कोई red था. And in essence for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो जो installation करना था उनको, कौन सा installation? जो first democratic country बनेगा क्या? साउथ अफ्रीका and non-racial government. कोई रेस नहीं होगा यहाँ पे, सब non-racial होगा. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. तो जो लवली ऑटम डे था वहां पे वो उनका कंपनी कौन था कि उनके डॉटर मतलब उनका बेटी जिनानी थे. ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लियर वाज द फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो जो मिस्टर डे क्लियर थे वो पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट के स्वर्न लिए मतलब शपथ लिए. देन थेबो मेबकी was sworn in as first deputy president. When it was my turn, जब उनका टर्न था, I pledged to obey and uphold the constitution. तो वो प्लेस किए, अबे जो उनका जो पालन है, उनका जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको वो प्रॉमिस किए कि वो अच्छे से पालन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का. And devote myself to the well-being of the republic and its people.
और उन्होंने शपथ लिया है कि मैं अच्छाई करूंगा अपनी देश के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो गेस्ट मेरे को देख रहे थे और जो वाचिंग वर्ल्ड मतलब जो जितने सारे लोग मेरे को देख रहे थे वहां बैठकर, तो मैं उनको कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। जो न्यूबर्न हुआ, न्यू फ्रीडम मिला हमको, उसका हम क्या करेंगे, ग्लोरी मतलब हम जश्न मनाएंगे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो यहाँ पे बताया गया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है, लास्टेड टू लॉन्ग मतलब बहुत दिन तक चला वो, लेकिन अभी क्या हुआ, ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। जो नया सोसाइटी बर्न हुआ है उसको लेकर कुछ जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत का प्राउड फील करेंगे, इंसान प्राउड फील करेंगे। वी हु वेर आउटलॉज not so long ago, outlaws means because of this policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa, have today been given the rare privilege to be host to the nation of world on our own soil। तो हम अपने देश में कुछ होस्ट करने के लिए हमको कुछ इतना प्रिविलेज नहीं मिलता है, रेयर प्रिविलेज मिलता है हमको। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पे बताया गया कि जो वो थैंक यू कर रहे हैं या धन्यवाद दे रहे हैं जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं वहाँ पे, और जो पोजीशन ले हैं उनके कंट्री के खिलाफ, और कंट्री के साथ में जो विक्ट्री हुआ है, एक कॉमन विक्ट्री हुआ है जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन। एमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन से अपने को फ्रीडम देना। We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation। Deprivation means state of not having one's rightful benefits। एक इंसान को उनका जो राइट है वो सारे चीज नहीं देना। Suffering, gender and other discrimination। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है, और जो नेल्सन मंडेला है वो ये सब कैसे उसको हटाएंगे उसके बारे में वो चर्चा की। Never ever never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो वो नेवर नेवर मतलब बहुत सारे वो दबाव के साथ और अपनी जो जोर देकर वो बोले कि ये कभी नहीं होगा कि अगर कोई इंसान हमको आके जोर देगा। ऑपरेशन मतलब जोर देना किसी बात को लेकर या किसी भी चीज के लिए। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट अस फ्रीडम रेगिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये बात कहकर वो उनका समाप्त किया। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ही स्पीच, तो जो उनका स्पीच के पहले मैंडेला मेंशंस, तो उन्होंने मेंशन किए कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय, सॉरी ये क्वेश्चन। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। Spectacular array means an impressive display। मतलब बहुत उनको खुशी मिलता था कि एक नई विक्ट्री आया है हमारे देश में। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो हेलीकॉप्टर उड़ने लग रहे थे तो अच्छे दिख रहे थे जब वो यूनियन जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर वो जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। जो freely and fairly elected हुआ है उसको victory को लेकर वो वहां पे demonstrate कर रहे थे हेलीकॉप्टर के साथ। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me, placed their loyalty। I wasn't unmindful, not mindful of means conscious of or aware of, किसी चीज के जानना या जागृत होना। Of fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो उनको जो याद था कि कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही साल पहले वो मेरे को अरेस्ट किए थे, लेकिन अभी वो सैल्यूट कर रहे हैं मेरे को। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of New African flag।
Chevron means a pattern in the shape of a V shape. The day was symbolized for me by playing of our two national anthems. तो दो anthems वो गाए. क्या क्या था वो? The Vision of White singing Nkosi Sikelel ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम. मतलब उनका जो एंथम था वो दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए. द ओल्ड एंथम of the republic, although that they neither group knew the lyrics of anthem they once despised means had a very low opinion of, they would soon know the words by heart. तो वो जो भी जानने वाले थे जो वर्ड्स वो हार्टली जानने वाले थे. On the day of inauguration, जो इनागुरेशन के दिन था, I was overwhelmed with a sense of history. तो जो उनका हिस्ट्री का जो सेंस था उसमें वो ओवरवेलम हो गए थे. In the first decades of 20th century, जो 20th century का पहला हिस्सा में, पहले 10 साल में, decade मतलब 10 साल. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa passed off their preferences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century, my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all the peoples, regardless of the color of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो वो दिन आया था कि वो unimaginable sacrifices किए थे thousands of people, वो दिन आया था. People whose suffering and courage can never be counted or repaired. जो suffering हुआ था, जो people का suffering हुआ था और जो उनका जो courage था, वो कभी भी count नहीं हो सकता या उनको दोबारा pay नहीं कर सकते. I felt that day, as I have on the many other days, that I was simply the sum of all those Africans patriots who had gone before me. जो मेरे सामने वो आए थे तो उनके लिए मैं कुछ कर सकता था उस टाइम. That long and noble line ended and now began again with me. I was penned and I wasn't able to thank them. तो उनको बहुत पेन लगा, बहुत कष्ट हुआ, बट उनको थैंक यू कहने के लिए उनका एबल नहीं था, मतलब वो सक्षम नहीं थे. And that they weren't able to see what their sacrifices had wrought means done or achieved. तो वो कितना sacrifice किए थे देश को बचाने के लिए, देश को चेंज करने के लिए, वो उनको वो देख भी नहीं सकते थे. The policy of apartheid created deep and lasting wound in my country and my people. तो जो apartheid का जो apartheid the policy था वो एक deep and lasting wound create कर दिया था जो हमारे देश के लिए और हमारे देश के जनता के लिए. All of us will spend many years. तो हम बहुत साल यहाँ पे spend करेंगे. If not generation नहीं हुआ तो recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced Oliver Tambo's, the Walter Sislas, the Chief Luthels, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Sabukus of our time, men of such extraordinary. You can see in this picture. Courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. जो उनका जो जेनरसिटी था, कोरेज था, विजडम था, वो कभी भी हम उसको भूल नहीं सकते. हम जान दैट दे लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन. तो उनका जो जेनरसिटी था, जो कोरेज था, विजडम था, और कोई उनको लाके नहीं दे सकता था. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. तो मेरा कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स है और रिच इन जेम्स, बहुत सारे मोती है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. तो मेरे को पता है कि सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है मेरा जनता. फाइनर एंड टोरेड देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of the courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea.
तो जो उनके जो जो मैन वुमेन का जो रिस्क था, और रिस्क को हटाकर मैं उनको एक आइडिया दूंगा, एक जीने की शैली दूंगा, एक जीने का बाजार दूंगा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग स्टैंड अप होते हैं, मतलब खड़े होकर वो अटैक का सामना करते हैं, टॉर्चर भोगते हैं विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. But the triumph over it, the brave man is not who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पैदा हुआ है किसी अलग कलर को वो हेट करेगा, मतलब घृणा करेगा, या बैकग्राउंड का घृणा करेगा, या रिलीजन को. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes from naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed out to limits means pushed to the last point in our ability to bear pain, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goddess is a flame that can be hidden but never extinguished. In my life, every man has twin obligations. मेरे जीवन में twin obligations था. Twin मतलब दो. Obligation to his family. किसके साथ था? Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people. लोगों के लिए, community के लिए, country के लिए, in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations. Inclinations means natural tendencies of behavior and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. जो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लीव, जो मैन ऑफ कलर था मतलब ब्लैक कलर था, कि वो जीने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. तो उनको पनिशमेंट दिया गया था, और आइसोलेटेड मतलब एक जगह में उनको रखा गया था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably reaped from his family and his home and was forced to live in a life apart. तो उनको ये सब फुलफिल ड्यूटी जो उनके जो जनता के लिए कुछ करने के पश्चात, तो उनको क्या किया कि उनको फोर्सफुली उनको भेज दिया गया एक लाइफ अपार्ट, मतलब एक रहने के लिए जेल में कैदी के हिसाब से रहने के लिए उनको भेज दिया गया. A twilight existence of secrecy and revelation. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो मेरे को ये सब फुलफिल करना था, ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना था एज ए सन, बेटे के हिसाब से, ब्रदर के हिसाब से, फादर के हिसाब से, या हस्बैंड के हिसाब से. आई wasn't born with a hunger to be free. तो मैं फ्री होने के लिए जन्म नहीं लिया था. I was born free. मैं फ्री जन्म हुआ था. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. जो जो उनके जो फादर का जो जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो पालन किए, और जो कस्टम्स था उनका जो ट्राइब का कस्टम्स था उसको अवॉइड किए, मतलब माने वो. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion means something that appears to be real but isn't. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from us, जब मैंने डिस्कवर किया कि जो मेरा जो फ्रीडम है वो मेरे से ले गया हुआ, that I began to hunger for it. तो मैंने उनका भूखा होना शुरू हो गया. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. तो पहले जो मैं स्टूडेंट था तो फ्रीडम केवल मेरे ही लिए मेरे को चाहिए था.
the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother sister were not free. तो पहले तो मैंने देखा कि मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरा भाई बहन या कोई भी फ्री नहीं है. I saw that it wasn't just my freedom that was curtailed में reduced, कम हो गया था, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was the desire of freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो जो वो लोग थे, तो उनके लिए क्या होता, उन डिग्निटी के हिसाब से, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से जीने का अधिकार उनको मिलना चाहिए. तो ये इसके लिए वो लड़ने लग गए. They transformed a frightened young man into a bold one. They drove a law-abiding attorney to become a criminal. They turned a family-loving husband into a man without a home. That I forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed it when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were chains on all of them. The chains all of my people were chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. मतलब ऑपरेशर जो थे, जो दबाव डालते थे, तो उनको भी वैसा ही ऑपरेस्ट करना चाहिए था. As man who takes away another man's freedom is a prisoner or of hatred. तो जो किसी व्यक्ति का फ्रीडम ले जाता है, तो हम उसको फ्रीडम prisoner of hatred बोलते हैं. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. Thank you for watching this video, and please subscribe my channel for more videos. And if you have any doubts regarding this topic, you can write in the comment section. I will talk to you.